Morning students, as we have completed our first term, now we will move forward with our second term syllabus, and in that our first chapter is rational numbers. What are rational numbers? As we have already done certain numbers like whole numbers we have done, natural numbers, and integers. We have already studied about these numbers. Whole numbers, the numbers starting with 0, 1, 2, 3 and all counting numbers. Natural numbers, the numbers start from 1, 2, 3 and all these counting numbers. And integers are the number with 0, negative part and positive part. So these are the numbers which we have already done. Now we will come to the topic rational numbers. Now what are these rational numbers? Rational numbers are the numbers which are in the form of P upon Q. The numbers which are in the form of P upon Q, or either we can say fraction. But Q is not equals to 0. The numbers which are in the form of P upon Q, but Q should not be equals to 0. It means denominator आपका 0 नहीं होना चाहिए. It should be any number, counting number. So if I am taking 3 upon 4, this is a rational number. But if I am taking 4 upon 0, this will not be a rational number because the denominator here is 0. So this is not a rational number. So these rational numbers can be positive also and negative also. जो rational numbers हैं, they can be positive and negative also. For example, if I am taking 9 upon 4, it is a positive rational number. And if I am taking minus 9 upon minus 4, it is also a positive rational number. Why? Because minus is positive. So जब आपकी न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, इफ आई एम टेकिंग minus 9 upon 4, दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर. एंड इफ आई एम टेकिंग 9 upon minus 4, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव रैशनल नंबर. अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, देन ऑल्सो इट इज नेगेटिव. And when the numerator is positive and denominator is negative, then also it is a negative rational number. But it should be in a fraction. Fraction में होना चाहिए और denominator आपका 0 नहीं होना चाहिए. So if I am taking 0 upon 8, is this a rational number? Yes, it is a rational number. Why? Because here the denominator is 8. 0 होता तब नहीं था. अगर होता ना 8 upon 0, then it is not a rational number. But if it is 0 upon 8, then it is a rational number. And if I say which rational number is this? Either positive or negative. It is neither positive nor negative. जो 0 upon 8 आप फ्रैक्शन लोगे, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जैसे आपने इंटीजर्स में ऑलरेडी किया हुआ है, 0 इज नाइदर अ नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. तो फ्रैक्शन भी अगर 0 upon 8 है, दिस इज अ रैशनल नंबर, बट इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. नाउ रिलेटिंग दिस टू दिस टॉपिक rational number, we will start with our chapter and exercise 2A. In question number 1, they was what are rational numbers? What are rational numbers? And you have to give the example of positive and negative rational numbers. So what you have to do, in the starting of the chapter, definition is given to you. You have to note down in the notebook. The numbers in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0, are called rational numbers. Like this you can write this definition. And if they want example of positive and negative rational numbers, then you can give these examples. These are positive rational numbers because
4/9, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव. और जब आपके ये दोनों नेगेटिव होंगे देन ऑल्सो इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. और नेगेटिव में आप ये एग्जांपल्स दे दोगे, जैसे न्यूमरेटर -4/7 और डिनोमिनेटर 7/-9. सो लाइक दिस यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. जब आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से हैं, देन यू कैन गिव एनी अदर एग्जाम्पल्स. Okay, so in first question, first write these definition, then you can give the examples. In the exercise also they have asked, in this first question they have asked, give an example of a rational number which is neither positive nor negative. As I have told you, if you are writing in this form 0/8, 0/4, 0/7, these numbers are neither positive nor नेगेटिव. क्योंकि आपका जब न्यूमरेटर में 0 आ गया तब आपका कोई भी फ्रैक्शन नाइदर नेगेटिव होगी नाइदर पॉजिटिव. सो इन दिस क्वेश्चन यू विल राइट लाइक दिस ओनली. इन सेकेंड क्वेश्चन वी कैन डू इट इन अ बुक ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स? नाउ 5/15 इट इज अ रैशनल नंबर. वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर इज 15. अगर ये डिनोमिनेटर आपका 0 होगा देन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. सो दिस इज अ रैशनल नंबर. -6/23 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. नाउ सी दिस नंबर 17 is given but it is not given in a fraction. But you already know we can write 17/1 also. आप अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें 17 को, यू कैन राइट इट लाइक दिस 17/1. Now denominator is not equals to 0. So 17/1 is rational number. Similarly, -25/1. It is a rational number. Similarly, here also 0/1. 0 का आप लिख सकते हैं 0/1. So this is also a rational number because denominator is not equals to 0. Denominator आपका 1 है. Have you clear this? Come to this part. Now this is not a rational number. Why? Because denominator is 0. This is also not a rational number. Same again, denominator is 0. 0/8. It is a rational number because denominator is 8. Similarly, 9th and 10th part is also a rational number. Hope you have understood the topic rational numbers. Now, third question, it is given, write down the numerator and denominator of each of the following rational numbers. ये आपको पता ही है कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है. So, in this fraction, 12 is a natural number, numerator, and 17 is a denominator. Here 6 is numerator, -23 is a denominator. Similarly, if we see this part, fifth part, -8/1. -8 is a numerator and 1 will be your denominator. तो जब आपको सिंपल नेचुरल नंबर्स दिए होते हैं और इंटीजर्स गिवन होते हैं, यू कैन कीप इट लाइक अपॉन 1 and this will become a rational number. Yes. Now come to question number 4. In question number 4 they have asked which of the following are positive rational numbers. As we have already done that positive rational numbers are the numbers in which either numerator and denominator are both positive or either numerator and denominator are both negative. तो यहाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव. सो इन फोर्थ क्वेश्चन, विच विल बी द पॉजिटिव रैशनल नंबर? -7/8. दिस विल नॉट बी अ पॉजिटिव बिकॉज न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. -13/17. दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. Third part, this is a positive rational number. Why? Because numerator and denominator are both negative. Now in the fourth and fifth part, आपको पहले भी बताया कि जो 0 है, it is neither a negative nor a positive number. So this is neither a negative rational number, neither a positive rational number. तो ये आपके दोनों positive rational numbers नहीं है.
Similarly, we will come to the fifth question. They have asked which of the following are negative rational numbers. Negative rational numbers कौन से होते हैं? If numerator is negative and denominator is positive, or if numerator is positive and denominator is negative. So first part will be your negative rational number. Second part is not a negative rational number. Why? Because both are negative. तो ये तो आपका पॉजिटिव बन गया. -21/1, अगर आप इसको -21/1 लिख दोगे, दिस विल बी अ नेगेटिव रैशनल नंबर. 0/-3, अगेन इट इज नाइदर अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव बिकॉज 0 इज देयर. 17 को अगर अपॉन 1 करोगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, पर हमसे कौन सा पूछा है? नेगेटिव रैशनल नंबर. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ नेगेटिव रैशनल नंबर. Now come to the question number 6. Question number 6, you have to find 4 rational numbers equivalent to each of the following. आपको एक rational number given है. If I am taking 6 questions, second part. One rational number is given -5/9. ये आपका रैशनल नंबर कैसे बना होगा? अगर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी -5/9. वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स. तो आप नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट जो आपका सेकेंड रैशनल नंबर होगा या फर्स्ट रैशनल नंबर आप ले लो यहाँ पे. दिस विल बी -5/9 इज अ रैशनल नंबर. यू विल मल्टीप्लाई बाय 2. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. व्हाट विल बी द रैशनल नंबर? -10/18. Second rational number will be, if you will multiply -5/9 with both 3, आपने 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. दिस विल बी -15/27. थर्ड रैशनल नंबर, it will be -5/9 multiply by 4 multiply by 4. This will be -20/36. And fourth rational number will be -5/9 into 5. न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी. दिस विल बिकम -25/45. So like this, these rational numbers will be equivalent to the given rational numbers. इक्विवेलेंट कैसे? जैसे आप कटिंग करोगे इनकी, अगर आप कटिंग करके देखोगे वो हमेशा क्या आएगा? -5/9. तो ये सारे इक्वल हो गए हैं. सो हाउ दे विल बिकम इक्वल? इफ यू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर्स. 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 and 5. सिमिलरली इफ वी टेक फिफ्थ पार्ट, इट इज गिवन -1. -1 का फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट यू विल मेक इट रैशनल नंबर. तो -1/1 multiply by 2 multiply by 2. What will become? -2/2. Second rational number, -1 into 3/1 into 3. This will become -3/3. Third, -1 into 4, 1 into 4. This will become -4/4. And fourth will be -1 into 5, 1 into 5. So this will become -5/5. तो अब जब आप इसकी भी कटिंग करोगे, what will it come? -1. जब आप इन सबकी कटिंग करोगे तो क्या आएगा? -1. So these numbers are also equivalent to the given rational numbers. So what you will do today? You will revise first rational number and complete exercise 2A from question number 1 to 6. Question number 2, 3 and 2 to 5 will be in the book only. ये आपने बुक पे करनी है. 1 and 6 question you will do it in your notebooks. Thank you.